Yesterday, what was the last topic we have discussed yesterday? Yes, Athav, please. Sir, yesterday we had begun with the chapter. We completed the introduction and we did the law, Mendeleev's periodic law and Henry Moseley's periodic law. Today we are going to start with the modern periodic table structure. Yes, thank you, Athav. This was just the opportunity what I took it to have the interaction with you. I was properly able to recall what we have where we have left yesterday, what we were discussing, but need to have the interactions, and it's always a good experience to have interaction with you, and it's better you should talk a bit here in the lectures. So thank you, Athav. No, rest people, please try to talk, try to open up so we can have an interaction regarding the topics. अदरवाइज वन वे डिलीवरी तो चलता ही रहता है, बट थोड़ा सा आपकी तरफ से भी कुछ टॉपिक्स आते हैं, कुछ डिस्कशन आता है तो बढ़िया रहेगा. ठीक है, तो जैसा भी अथर्व ने कहा कि कल हम लोग ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल चैप्टर को स्टार्ट कर चुके हैं, और स्टार्ट करने के बाद एग्जाम ओरिएंटेड उसके अंदर के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं. पीरियोडिक टेबल के अंदर दुनिया भर के कई सारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की, और वो कोशिश इन द अर्ली ऑफ 19th century स्टार्ट हो चुकी है, when there were 30 elements. In early of 19th 30 elements were present, so scientists tried to classify all these 30 elements. Amongst them, notable scientists we have seen Prott's unitary theory, we also seen Dobereiner's triads, we also seen Newland's law of octaves. So these were the scientists what we have seen who have done the notable work according to them. But the most important two scientists without which this modern periodic table is simply impossible is nothing but Mendeleev, and number two is nothing but Moseley. So while classifying the elements, rather than to put elements according to the properties into the periodic table, can we have some law-based classification? Can we have a conceptual-based classification of the elements? That was one of the opportunity, and this is very rightly taken by Mendeleev first time, and that's why even Mendeleev is also called the father of this periodic table, because Mendeleev is the first scientist who tried to classify elements on the basis of concept or conceptual basis, on the law basis, principle basis. So we have yesterday seen the law, because yesterday मैंने screen share भी किया था जिसके अंदर Mendeleev's law और Moseley's law हमने देखा, और दोनों लॉ के अंदर कहाँ और कितना डिफरेंस है ये भी हमने उसके अंदर डिस्कस किया, ये भी हमने वहां पे देखा हुआ है, तो ये अच्छी तरह हम जानते हैं. So I would like to listen from your side. What is Mendeleev's law and what is Moseley's law? So anyone amongst you, please. Yes, please. So may I? Yes, please proceed. So Sir, Mendeleev's law states that any physical or chemical properties of elements are periodic functions of their atomic masses. Very good, very nicely stated. Nicely stated. Yes, Prashant, bolo. Take it. Prashant like to have a communication with text only. Very good, nicely stated. Is there anyone who will tell me the Moseley's periodic law? May I? No problem, Prashant. Yeah, please. Yes. The physical and chemical properties of elements are the periodic function of their atomic numbers. Their atomic numbers. Okay, thank you very much. Atomic numbers. Yes, thank you. Very nice, very nice. See, these are the two crucial words. These are two fundamental definitions. Even here in the morning session, we have seen what is the difference between atomic mass and what is the difference between atomic number. At the time of Mendeleev, there were 64 elements were present, and he tried to classify all these elements on this Mendeleev's law basis, principle basis, and that principle states that the physical and chemical property of the elements are the periodic functions of their atomic mass. So according to Mendeleev, atomic mass is a very important or fundamental property of each and every element. So that decides the properties, that is physical and chemical properties. Law का meaning ये है
किसी भी एलिमेंट्स के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी उसके एटॉमिक मास के कारण होते हैं, उसके कारण डिसाइड होता है सबस्ट्रेट का मेटल। इसी आधार पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं। मेंडलीव का लॉ देखा, मेंडलीव ने 64 एलिमेंट्स क्लासिफाई किए थे, उसके कुछ प्लस पॉइंट देखे, कुछ एम्प्टी स्पेसेस थे, कुछ एलिमेंट्स प्रिडिक्ट किए, वो बाद में ढूंढे गए, उसके अंदर रखे गए, वगैरह वगैरह हमने देखा। एट द सेम टाइम उसके कुछ लूपहोल्स भी थे। तो कुछ एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर ज्यादा था वो पहले रखे गए, जिनका एटॉमिक नंबर कम था वो बाद में रखे गए, क्योंकि मेंडलीव ने सारे एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास रखे थे, तो वो भी हमने उसके अंदर देखा हुआ है। उसके बाद being उसके कुछ लिमिटेशन थे, mostly who was dealing with metals, their X-ray frequency, and he found that square root of frequency is directly proportional to specific integer, and that specific integer is very specific, very constant for any particular element, and that is nothing but the atomic number. So the scenario has been changed, and according to Mosley, atomic number is a very, very fundamental property of each and every element. Atomic number is very, very fundamental property of each and every element. So the law got changed. That is, physical and chemical property of the elements are the periodic functions of their atomic number according to Mosley. So बाद में जब डिस्कशंस होते हैं, बाद में जब रिसर्च होते हैं, आगे आता है कि मोस्टली ज्यादा करेक्ट है। एटॉमिक मास इज आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, लेकिन किसी भी एलिमेंट के ज्यादातर प्रॉपर्टीज, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज वो एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करते हैं, और इसलिए मोस्टली का क्लासिफिकेशन ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है, ज्यादा साइंटिफिक है, ज्यादा राइट है। एंड दैट्स व्हाई throughout the world Mosley's concept has been accepted, and the classification of elements is done on the basis of Mosley's law or Mosley's principle. Rest of the things are almost similar. उसने क्या किया कि he arranged all the elements according to the increase in atomic number, and he found that every eighth element has the same properties. Like first one he got the table, and that's called the periodic table. But furthermore, research has been continued. Different scientists from the different parts of world contributed into this periodic table. There were some new groups added, there were some new periods added, and then finally, and that periodic table is always open. जैसे मैंने कल कहा था कि अगर आप में से कोई बच्चा, कोई जीनियस बच्चा आगे जाके कुछ periodic table के अंदर कुछ एडिशंस करता है, तो वहां पे ओपन, that periodic table still open है, बस हमें प्रूव करना पड़ेगा कि this is the right way. Then new elements can be added, new periods or groups can be added, and that a different version of the periodic table, what we got it, and this periodic table is nothing but the modern periodic table. So let's have a look towards this modern periodic table. So we'll have this modern periodic table. What is this? Let me check it. Not on. Sorry, this is not. Okay. So you have on your screen share. शायद आप आपके स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो. This is nothing but a modern periodic table. Am I? So hope you are watching a modern periodic table on your screen. So this is the modern periodic table जो हमारी बुक के अंदर भी है और हम अच्छी तरह जानते हैं. So अभी देखिए यहाँ पे तो ये टेबल बहुत अलग दिखता है, हमें 2D दिखता है, बट प्रैक्टिकली अगर देखेंगे तो ये जो टेबल है ना ये 3D है. इट इज नॉट 2D. ये 2D नहीं है, यहाँ पे दिखा है 2D. But अभी what is this modern periodic table consist of? एक बार देखिए, modern periodic table consists of 18 vertical columns known as groups. So numbers are also given 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 up to 18. ऐसे numbers दिए. So this periodic table consists of 18 vertical columns जिन्हें groups कहा जाता है और 7 horizontal rows जिन्हें periods कहा जाता है. So all elements are classified here in this periodic table as in 18 groups and 7 periods. So all the elements are classified here in this one. As of now, there are 118 elements, which includes natural as well as artificial elements. So including natural and artificial elements, we have as of now 118 elements. In future, there may be additions of the elements, and that's why there may be additions of some groups or some periods. हो सकता है. As of now, it is completely filled because there are 118 spaces, and all these spaces are filled by all the elements. So this is modern periodic table. तो आप देखिए ये शायद इसमें से काफी सारा पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये मॉडर्न पीरियड टेबल का, जहाँ पे apart from these groups and periods, there are number of criteria what we use, number of properties what we have related to each and every element. So this periodic table also has the classification of elements on the basis of S block elements, P block elements, D block elements, and F block elements. इस तरीके से भी क्लासिफिकेशन इस पीरियोडिक टेबल के अंदर मिलता है. तो आप देखिए यहाँ पे ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड आपके स्क्रीन के ऊपर टेबल दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं टेबल को ही डिस्क्राइब कर रहा हूँ, जो हमारे बुक के हिसाब से ही है वही है.
एक बार ये पीरियोडिक टेबल समझ में आएगा, फिर उसके बाद ये कैसा बना है इसके बारे में हम देखेंगे। ऑलरेडी आप जानते हो, बट देखिए ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड की अगर बात करते हैं, जहाँ पे अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जहाँ पे है, दैट इज ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के अंदर। सो जो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड है, जहाँ पे ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड वर्टिकल कॉलम्स दिए हैं, जहाँ पे अल्कली मेटल्स फर्स्ट ग्रुप में है और सेकंड ग्रुप कंसिस्ट ऑफ, यू कैन से, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं। एंड ऑल दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज इवन एस ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर ना हियर? All these elements in is group first and second are called as S block elements. Now the thing is that why these elements are called as S block elements. We'll discuss it, no doubt. Just have a look over this table. Secondly, you can have this group 3 to group 12. So जो middle part दिखता है depression के साथ, group 3 से लेकर group 12 तक, ये जो सारे elements है, all these elements are called as D block elements. All these elements are called as D block element, जिसके अंदर स्कैंडियम से लेकर जिंक का पहला रो है, फिर दूसरा रो है जिरकोनियम से लेकर कैडमियम, फिर हाफनियम से लेकर मर्क्यूरी एंड रुदरफोर्डियम से लेकर सीनियम। ये सारे एलिमेंट आपको यहाँ पे मिलते हैं। जो 4 सीरीज यहाँ पे मिलता है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट उन्हें कहा जाता है, तो मिडिल पोर्शन, एंड दैट इज नथिंग बट आल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिशन मेटल्स। सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिशन मेटल्स, जो आपको ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 में मिलता है। उसके बाद we can have a look over there, that is group 13 to 17, 13 to 17 मतलब, और मतलब 18 भी आप पकड़ लीजिए उसके अंदर। So group 13 to 18, these elements are called as, you can say, P block elements. Group 13 to 18 are called as P block elements, and periodic table के नीचे जो दो separate series दिए हुए हैं, periodic table के नीचे जो separate series दिए, actually असल और real periodic table में this is not the space। ये पीरियोडिक टेबल 2D में दिखाने के लिए यहाँ पे 2 लाइंस नीचे दिए गए। एक्चुअली ये इसका 3D वर्जन अगर देखते हैं तो इनकी स्पेस अलग जगह है, इनकी स्पेस अलग जगह है। तो आप देखेंगे ग्रुप थर्ड, देखिए आप लोग ग्रुप थर्ड के अंदर पहला एलिमेंट आपका स्कैंडियम है, जो येलो पैच आपको दिखाई देता है, ओके, जिन्हें रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहा जाता है, नो डाउट एट ऑल। सो ग्रुप थर्ड के अंदर नीचे स्कैंडियम दिखता है, उसके नीचे यट्रियम दिखता है, उसके नीचे लैंथनम दिखता है, उसके नीचे एक्टिनाइट दिखता है। और एक्टिनाइट लैंथनम का देखिए आप एटॉमिक नंबर 57 और 89 दिखता है। सो ये जो लैंथनाइट सीरीज है वो लैंथनम के बाद का है, और एक्टिनाइट सीरीज वो एक्टिनाइट के बाद का है। सो वो एलिमेंट्स एक्चुअली इस पीरियोडिक टेबल में परपेंडिकुलर टू दिस पीरियोडिक टेबल, परपेंडिकुलर टू थर्ड ग्रुप एंड सिक्स्थ पीरियड, lanthanide series is perpendicular to third group and sixth period, whereas actinide series is perpendicular to third group and seventh period। इस तरीके से वो परपेंडिकुलर होता है। सो ये 3D टेबल भी होता है, नो डाउट एट ऑल। सो शायद आप इमेजिन कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा सा जैसे मैं ये स्क्रीन से हटा दूंगा, वापस एक बार बोर्ड के ऊपर आपको जरूरत है तो सिखाऊंगा। लेकिन फिर भी ये पीरियोडिक टेबल जो हम बात करते हैं, दैट इज, यू कैन से, दैट इज इन 2D जो हमारे सामने है। So this periodic table has important जो चीजें देखते हैं हम लोग, number 1, that is it has 18 vertical columns known as groups and 7 horizontal rows known as periods. Whereas these elements has also classification of metals, non-metals and metalloids very well are classified here in this periodic table. This periodic table has also classification of the elements according to S block elements, which is group first and group second, P block elements, which is group 13 to 18, D block elements group 3 to 12, and F block elements, that is lanthanide series and actinide series, which is put below this periodic table. These are called as F block elements. What is this S block elements? What is this P block elements? S block element हमने देखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा हुआ है। मतलब बेसिकली ये पूरा पीरियोडिक टेबल के अंदर जो क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स का, दिस क्लासिफिकेशन इज प्योरली बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसी भी एलिमेंट का इस पीरियोडिक टेबल के अंदर का प्लेस उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के आधार पर ही डिपेंड करता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड करता है उसके एटॉमिक नंबर के ऊपर, जो मोस्ले ने कहा था। मोस्ले ने बताया कि एटॉमिक नंबर इज अ वेरी फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट, सो दैट्स व्हाई atomic number decides the properties, atomic number also decides the electronic configuration, and that electronic configuration decides the place of element in this periodic table. So periodic table के अंदर का सारा जो आपको क्लासिफिकेशन मिलता है, that depends upon the electronic configuration. So when we talk about S block elements, that is group first and group second, take any of the element, so उनका last electron occurs in S block. So all the elements which are present in
S block has last electron in S subcell, and that's why they are called as S block elements. लास्ट इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम करते हैं, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स हम भरते हैं, शेल सबसेल ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल अप करते जाते हैं, और उसके लिए देखा हमने अबव प्रिंसिपल का रूल है, देन काफी सारे रूल्स हमने देखे, हंस रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल देखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल सबसेल्स एंड ऑर्बिटल. उसमें से जब हम इलेक्ट्रॉन शेल सबसेल ऑर्बिटल में भरते जाते हैं, लास्ट का इलेक्ट्रॉन कौन से सबसेल में जाता है, बिकॉज शेल्स के टाइप होते हैं 1 2 3 4 हमने देखा है, सबसेल्स के टाइप होते हैं S P D F ऐसे होते हैं, ठीक है. सो लास्ट का इलेक्ट्रॉन किस में होता है, लास्ट का इलेक्ट्रॉन S ब्लॉक में है, P ब्लॉक में है, D ब्लॉक में है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो S ब्लॉक एलिमेंट उन्हें S ब्लॉक इसलिए कहा जाता है बिकॉज उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन S सबसेल में होता है. D ब्लॉक के एलिमेंट जो मिडिल पार्ट में दिखते हैं ग्रुप 3 से लेकर 12 तक, उनका लास्ट का इलेक्ट्रॉन D सबसेल में प्रेजेंट होता है, लास्ट का इलेक्ट्रॉन D सबसेल में प्रेजेंट होता है. जरूर यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस मिलते हैं, वो क्यों और कैसे हम देखेंगे, जैसे मैं स्क्रीन से हटाऊंगा बताएंगे. Then at the same time you can have here group 13 to group 18, all these elements are called as P block element because इनका last electron आपको P में मिलता है, और bottom में जो lanthanide activities कहते हैं मिलती है, वो उन्हें F block elements कहा जाता है because उनका last electron F subcell में होता है, F में होता है, and that's why these are called as F block elements. So that is, you can say, this is the very well classified periodic table what is going here. ठीक है, तो ये periodic table का पिक्चर हमारे सामने यहाँ पे आ जाता है. ओके, जस्ट सेकंड. ओके, hope we are back because I have removed the screen share now. So again we'll go ahead with our theoretical part. So now जैसे मैंने बताया कि periodic table की हम जब बात करते हैं, मैं अभी उसका schematic diagram निकाल रहा हूँ बोर्ड के ऊपर. Okay, so this is a schematic diagram like this one. So see, this is periodic table जिसके अंदर 1 2 3 to लेकर 12, then 13 to 18 groups, 1 2 3 4 5 6 and 7. These are rows and parents. ये हम बात करते हैं. Now इस periodic table के अंदर यहाँ पे भी मतलब आपको चीज मिलता है like this one, जैसे यहाँ पे मिलता है वैसे यहाँ पर भी मिलता है. So we can have like this type of arrangement. No. So ये जो group first second है, these are called S block elements, they are called as T block elements, these are called as P block elements, and these are called as F block elements. This is also one of the important classification of the elements. तो जैसे मैंने पहला स्टेटमेंट किया था कि all these classification based on the electronic configuration, तो this S D F P block is also depend upon electronic configuration. So अब चलिए हम सोडियम की बात करते हैं. जो सोडियम यहाँ पे मिलता है इस ब्लॉक के अंदर, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर देखते हैं. सोडियम whose atomic number is 11, और हम अच्छी तरह जानते हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है. दैट इज, यू कैन से 1s2 2s2 2p6 and 3s1. दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम. अब देखिए सोडियम एलिमेंट जिसके अंदर एटॉमिक नंबर 11 है, इसके इलेक्ट्रॉन्स 11 है, तो 2 2 4 और 6 10, तो सॉरी यहाँ पे 8 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो इस सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन 3s में आपको मिलता है, थर्ड शेल s नाम का सबसेल. तो आप देखिए लास्ट का सबसेल आपको s मिलता है. सो दैट्स व्हाई दिस एलिमेंट हैज टू बी पुट इन फर्स्ट और सेकंड. फर्स्ट और सेकंड में आपको रखना पड़ेगा. Yes, Prashant has something to say, or he's saying orbital is added. Yes, no doubt at all, Prashant. See, Prashant has corrected the definition. 100% I will tell you whether this is the right definition. No doubt at all, scientific. While I am delivering the topic, I am trying to simplify the things, and then I will go to the scientific definition. So at the last 100%, I will tell you the scientific definition for all of this. But for the simplification purpose, I use a simple words or simple things. So when we talk about the sodium last electron, or if extra electron is added into the sodium, that must enter into the S subset. Okay, so that's why this sodium has to be put in S block. तो सोडियम का प्लेस यहाँ कहीं ना कहीं होना चाहिए, यहाँ पे कहीं ना कहीं होना चाहिए. So यहाँ पे ये जो last electronic configuration, that talks a lot more about this one. That talks a lot more about this one. So this 3 must indicate the row, that is period, to which that element belongs. So sodium must belong to third period. Sodium must belong to third period, and that is S block element, that is S1. S1 means it must be a first group element. Being there is one electron, it must be a from first group. So
By knowing this electronic configuration, we can fix the place of sodium. Sodium को हमें S में एक ही इलेक्ट्रॉन होने के कारण उसे फर्स्ट ग्रुप में रखना है और थर्ड रो में हमें रखना है. तो आप देखते हो, so see this is here, so ये हमारा हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है और ये हमारा थर्ड होता है. So here is hydrogen, here is lithium, and here is, you can say, sodium. तो आप सोडियम की जगह देखिए, being it's a one electron, it has to be a first group element, and this third cell indicates, you can say, third row. So third row and first is this position where the sodium has to be kept. तो अगर फ्यूचर में कई नए एलिमेंट ढूंढा जाता है और आपको इस पीरियोडिक टेबल के अंदर प्लेस करना है, तो बेस्ड ऑन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वी कैन हैव दिस राइट प्लेस. वी कैन हैव राइट प्लेस हियर इन दिस पीरियोडिक टेबल, जिस तरीके से सोडियम का है. So all these elements here in this first group has S1 electronic configuration. S1, all these elements. अभी ये सोडियम का थर्ड वन है, तो यहाँ पे 4s1 होगा, उसके नीचे 5s1 होगा, 6s1 होगा, so on bits like that. So when we are talking about the principle or conceptual definitions, 100% it is that the place of element in periodic table is decided by its electronic configuration. So the extra added or last added electron enter into that particular cell, that particular subcell, and that's why the name is given S block elements. So all these elements which belongs to here has their last added electron into the S subcell. All these elements whose last added electron is into a D. Say example, अभी यहाँ पे आपको दिखता है, यहाँ पे scandium नाम का element है, यहाँ पे scandium नाम का, that is scandium 21. So we can have a overlook, that is, you can say, scandium 21. So its electronic configuration देखिए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. एक बार इलेक्ट्रॉन चेक करते सारे, 2 2 4 और 6 10, 10 और 10 20 और 21. So there are 21 electrons. It has this 21 electron, and that last electron is D. Here you can say. So ये last electron आपको यहाँ पे 3D में मिलता है. So in that sense, it must be present in this D orbital जो यहाँ पे आपको मिलता है. Clear with this? तो D orbital यहाँ पे मिलता है. अब ये जो D orbital है 4s के बाद है. 4s के बाद है. That's why it should be go to the next row. So that's why it should go to the next row. So इसलिए element यहाँ पे है, scandium 21. Yes, scandium का solution. Scandium is called as a D block element. The extra added or last added electron enter into a D subcell, and that's why this is called a D block element. All the elements which are present here, जितने सारे element यहाँ पे present है, उनका last added electron always enters into D subcell, and that's why all these elements are called as D block elements. Similar, all elements present here has last added electron into P subcell, and that's why they are called as P block elements. So कोई भी element वहां से लेते हैं, there are many examples. We can have aluminum 13. So देखिए, this is aluminum who has 13 over here. So aluminum 13 has, you can say, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, and you can say 3p1. This is the electronic configuration. Though 10 or 10, 13 electronic configuration is there over here. So based on this one, we can say this last added electron of this aluminum is in P subcell, and that's why these are called P block element. इसलिए उन्हें P block elements यहाँ पे कहा जाता है, और ये सारे आपको यहाँ पे P block elements ही मिलते हैं. And being it's the highest number of n, that is principal quantum number is n, that's why it must belong to third cell. Third cell क्या वो belong करता है. So that's why third orbital में वो element present होता है, and that is the group what we get here. Whereas based on this electronic configuration also we can predict its place and position in the periodic table. But the last added electrons is present in P subcell, and that's why they are called P block elements. अभी here कोई भी एक element लेंगे तो उनका last added electron enters into F cell. आप लोग lanthanum, actinium, lanthanum 57, actinium 89 किसी का भी electronic configuration लिखे, last electron आपका इनका 4f में होगा और ये 5f में होगा. So we'll discuss that again, no doubt. But this is what we can say. So this is also one of the important classifications of this elements in periodic table. So the periodic table is a very greatest creativity by the scientists, and being, or as the name suggests, it's a modern periodic table. So number of concepts are used here in this modern periodic table. So how many exam में अगर आपको पूछा जाता है how will explain the modern periodic table? Yeah, detailed information regarding the modern periodic table. So we have that modern periodic table has 18 vertical columns known as groups and 7 horizontal rows.
known as period. Whereas there is also classification of element in periodic table as metals, non-metals, and metalloids. Also the classification of element, as you can see here, S block element, P block element, D block elements, and F block elements. Or what is this S block, what is this P block or D block? I stated over here. इसका definition हम ऐसे ही बोल सकते हैं. These are the elements whose last added electron enters into S subshell. These are the elements whose last added electron enters into D subshell. These are the elements whose last added electron enters into P subshell, and these are the elements whose last added electron enter into F subshell, and that's why they are called as F block elements. So that is what we can say. This is the overview of this modern periodic table and the classification of electron as S, P, D, and F block elements. So the thing is that being all these elements has the S block element, last electron in S, they have similar properties. See, electronic configuration decides the structure. Electronic configuration decides the structure, and structure decides the properties. मैं कई बार आपको कहता हूँ कि प्रॉपर्टी जो है मतलब साइंस का जाना माना कॉन्सेप्ट है. साइंस का जाना माना कॉन्सेप्ट है. प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रॉपर्टी किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन द स्ट्रक्चर्स. व्हाटएवर द स्ट्रक्चर अकॉर्डिंगली वी हैव द प्रॉपर्टीज. व्हाटएवर द प्रॉपर्टी अकॉर्डिंगली वी हैव द स्ट्रक्चर. And this has been proved here. So all these elements has the last element in last electronic S1, like this one, 3s1, S1. Only one electron is present in S substance. But all they have, they exhibit similar type of properties, and that's why they are called alkyl metals. No doubt, all are alkyl metals. These are the elements who has last electron. यहाँ पे magnesium आता है, who has last मतलब 2 electrons in S substance. So that's why all these elements have similar properties, and that's why they are called alkaline earth metals. So all elements which put here in the second group are alkaline earth metal. Why they chose or exhibit the similar type of properties? Because their electronic configuration exhibit, they have S2. But there are 2 electrons in S subshell like this one. So this is very important thing that their electronic configuration decides their structure and their structure decides their property. अभी जरूरी नहीं कि सबके प्रॉपर्टी एकदम जैसे हो, common properties होते हैं. 100% all element placed in the same group exhibit similar kind of properties. Not all the properties same. देखिए इस बात को थोड़ा डिफरेंस कीजिएगा. All properties similar and similar kind of properties, इसमें बहुत फर्क होता है. So that's why डी ब्लॉक में भी वही बात है वापस होगी. और इसके अंदर काफी सारे सीरीज भी है, वो भी देखेंगे हम लोग. लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर भी दे हैव डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी, दे एग्जिबिट द सिमिलर काइंड ऑफ structure, and that's why they have some common type of properties or similar kind of properties. Same here. So for all these elements, so classification जो मेंडलीफ ने किया था, डोबेरन ने जो किया था कि classification of elements on the basis of the properties, यहाँ पे हमने classification किया based on the atomic number, based on the electronic configuration. Automatically properties matched with that. Automatically properties matched with that, and this is the great achievement with this periodic table what we got here. Clear with this? So that is the you can say expansion of the periodic table. Now we have to go ahead with next one. So till what I will expect that you just have a look over the periodic table once again, then we can have next topic related with this periodic table. So please everyone have a look. Yes, please everyone, please have a look. Where are the elements and where are the alkali metals and all? Accordingly, we can go ahead.
Yes, please. Is there any difficult doubt with this? Okay. Now see, we'll move ahead with this periodic table. अब देखिए, जैसे again and again I'm stating that the place of the element in periodic table is decided by its electronic configuration. Electronic configuration decides many of the things. अभी देखिए, आपने अभी periodic table मैंने देखने के लिए कहा था आपको कि और बताया कि उसके अंदर उतने एलिमेंट मतलब कौन से पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट्स आपको मिलते हैं. ग्रुप तो हम देखे वर्टिकल कॉलम्स और कॉलेजल ग्रुप्स हुए, बट हम पीरियड्स की बात करते हैं. फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, ऐसे हम लोग उसके अंदर बात कर सकते हैं. वंस अगेन मैं एक बार आपको ग्रुप को शेयर करना चाहूंगा पीरियड टेबल. वन सेकंड. द रीजन बिहाइंड दैट, सॉरी, just a second. I'm not able to share the screen. Yes. अब देखिए, you can see this periodic table. We can say इस periodic table के अंदर देखिए आप एलिमेंट काउंट कीजिएगा. फर्स्ट ग्रुप में आपको कितने हैं, मतलब फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट दिखते हैं. फर्स्ट पीरियड consists of hydrogen and helium. Only 2 elements are present in first period. So we can say first period has only 2 elements. Only 2 elements. Second और third की बात करते हैं तो both has 8 elements each. Okay. So 8 elements each. That is, you can say second and third. Whereas when we talk about fourth, fifth, and sixth, so they have 2, 10, 18 elements each. Okay, so they have 18 elements each. Okay, whereas 6th and 7th has more elements. Almost they have 32 elements. Okay, so this is the you can say एलिमेंट्स. तो आप अगर फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं तो पहले ग्रुप के अंदर आपको पहले पीरियड के अंदर सिर्फ आपको 2 एलिमेंट्स मिलते हैं. आप सेकंड और थर्ड की बात करते हैं तो 8 एलिमेंट्स ईच पीरियड के अंदर मिलते हैं. हम लोग अगर फोर्थ और फिफ्थ की बात करते हैं तो 18 एलिमेंट्स इन ईच पीरियड है, और सिक्स सेवंथ की बात करते हैं तो 32 एलिमेंट्स इन ईच पीरियड आपको मिलता है. अभी ये क्यों है, मतलब बीच में आपको दिखता है कई सारी कटौती वगैरह की है, कई सारे ग्रुप्स नहीं है. फर्स्ट ग्रुप में सिर्फ लेफ्ट साइड में एक एलिमेंट और राइट साइड में एक एलिमेंट. Yes, again, it's not a design like that. It is a conceptual part. Why first group has only one element, and that depends upon the electronic configuration. अब देखिएगा, we'll have again calculation on the board. Board के ऊपर calculation देखते हैं. देखिए, first group में only 2 elements यहाँ पे आपको मिलते हैं. The reason behind that, let's have electronic configuration of hydrogen. Hydrogen has 1s1 electronic configuration, and the first group starts with hydrogen. First group starts with hydrogen. And this hydrogen has electronic configuration 1s1. It has first and last subcell, which is called an S subcell. And this S subcell has maximum capacity of 2. Maximum S subcell has maximum capacity of 2 electrons it can accommodate. तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में ये देखा है कि S subcell कौन सा भी क्यों ना हो, it can accommodate maximum 2 electrons. First हम पीरियड की बात करते हैं. फर्स्ट पीरियड स्टार्ट्स विद 1s1, और 1s1 has the capacity to accommodate maximum 2 electrons, and that's why first period has only 2 electrons, that is hydrogen and helium. There isn't any other element introduced in this one. So how many elements are present in the period, that also decided by the electronic configuration.
First group starts with 1s1, and 1s1 has the maximum capacity of 2 electrons, and that's why it has only 2 elements. Whereas you can have this lithium. So we have electronic configuration of lithium, which is a second one. Okay, lithium has electronic configuration. Lithium has 3. So this is 1s2 and 2s 2s1. This is the electronic configuration of lithium. अब देखिएगा, but lithium जिस पीरियड को स्टार्ट पीरियड में है वो सेकंड पीरियड में है, और सोडियम की बात करते हैं, दैट इज नेक्स्ट व्हाट वी कैन से सोडियम का भी लिखा है हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो यहाँ पे लिखा है, चलो कोई बात नहीं, सोडियम ये यहाँ पे लिखा हुआ है, सोडियम 11 has 1s2 2s2 2p6 and 3s1, that is what we can say. Yeah, अब इसके अंदर देखिए, this lithium has 1s2 2s and 2p. अभी सेकेंड शेल की बात करते हैं तो उसके अंदर 2s और 2p आता है, 2s और 2p आता है. नाउ हम अच्छी तरह जानते हैं कि लास्ट की अगर शेल्स की बात करते हैं तो लास्ट शेल इज अ सेकंड सेल. लास्ट सेल लिथियम के अंदर सेकंड सेल लास्ट सेल है. इसके अंदर 1s था, वही फर्स्ट और लास्ट था. इसके अंदर फर्स्ट भले ही 1s है लेकिन लास्ट सेकंड सेल है, और सेकंड सेल के अंदर 2 ही सबसेल्स होते हैं, एक है 2s और एक है 2p. अभी 2s का कैपेसिटी कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन्स का. p के अंदर कैपेसिटी कितना है? 6 का. So when we add this 2 and 6, that comes to 8, and that's why it has only 8 elements. So this group has only 8 elements over here. So उसके अंदर सिर्फ 8 ही होता है. Clear with this? That is what we can say electronic configuration for this one. Now, when we talk about third, that is sodium again. Sodium has last substance 3. So there is 3s, 3p, and 3d. No doubt at all. So actually, it should have इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 6 मतलब 8 और 18 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर होना जरूरी है. But there is a large gap between 3p and 3d, and that's why there isn't any electron between 3d. Electrons are only present in 3s and 3p. So that's why it has again only 8 electrons as like a second group. So उसके अंदर भी only 2 ही इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आपको मिलता है. So accordingly this करेगा भाई, ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन को डिटरमाइन आपको अंडरस्टैंड करना है वापस 1 सेकंड, या फिर हर एक एलिमेंट्स हम लोग लिख सकते हैं. खास करके when we talk about this first group elements, if we know the electronic configuration of this first group elements, we know the total periodic table. We know the total periodic table. So ये जो first group element with which its electronic configuration starts and ends, that matters, which decides how many elements will be there in the periodic table at all. That's what we have. So the remaining part remaining for these elements, because where we need to write a detailed electronic configuration, we'll discuss it 100% tomorrow. Time is over. Till then, thank you very much. Bye bye. See you tomorrow. Take care.